So this is the question number 8 from 2023 midterm evening session paper, and this question comes under the topic class 11th Python revision. So in this particular question, a Python code has been given to you and it has been asked what will be the output of this particular code. So in order to solve this one, first of all, let's do the line numbering and then try to figure out what each and every line is doing. तो अगर मैं बात करूँ लाइन नंबर 1 की, तो लाइन नंबर 1 पे क्या है आपका p की वैल्यू 100 डिसाइड हो गई है. नाउ लाइन नंबर 2 पे क्या आ रहा है आपका लूप हो रहा है स्टार्ट. तो फर्स्ट केस में x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी आपकी 1 से लेकर 4 तक. क्यों? क्योंकि जो रेंज फंक्शन की वैल्यू होती है वो क्या होती है स्टार्ट कॉमा एंड. तो वैल्यू कहां से कहां तक जाती है आपकी स्टार्ट से लेकर एंड माइनस 1 तक. हेंस तो x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी आपकी 1 2 3 एंड 4. यानी कि जो आपकी आउटपुट स्टेटमेंट है उसके अंदर आपके चार वेरिएबल्स आएंगे. नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ p एज पर द वैल्यू ऑफ x. तो फर्स्ट इटरेशन में इटरेशन स्टार्ट होने से पहले p की वैल्यू कितनी है आपकी 100 एज पर द लाइन नंबर 1. नाउ व्हेन x इक्वल्स टू 1, तो उस केस में क्या हो रही है p की वैल्यू रिड्यूस टू 100 माइनस 1 विच इज 99. तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा आपका 99 विल बी प्रिंटेड. ओके, फॉलोड बाय स्पेस. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट इटरेशन x की वैल्यू इज 2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 99 माइनस 1 इज 98. तो 98 इज प्रिंटेड along with the space and again 98 minus 1 which is 97. So 97 will be printed. Again it will become 97 minus 1 which is 96 and again 96 will be printed. Now in the next iteration जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी ओवरराइट हो जाएगी तो लूप क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेट हो जाएगा. तो लूप क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेट यानी कि एग्जिट कर जाएगा क्योंकि आपकी रेंज क्या हो गई है एग्जॉस्ट हो गई है. हेंस आवर आउटपुट वुड बी 99 स्पेस 98 space 97 90 space 96 and so on so forth. If you wish you can run this one on IDE as well. You will see कि जो आउटपुट आपने डिटरमाइन किया है सेम आउटपुट आपका IDE पे भी आएगा. Hence for this one option number A is the correct one. Now based on the similar concept we have a practice question for you. You need to answer this one in comment box what will be the right answer for this one. Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.